Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This video session is for English Grammar for class 7 and this is lecture number 32. My dear students, today we will discuss lesson number 4. The topic is future perfect tense. Now I am going to show you its definition and its formation. Here we have the definition and the formation of future perfect tense. The future perfect tense shows that an action will be completed at some definite time in future. The future perfect tense shows that an action will be completed at some definite time in future. Future perfect tense ऐसी सिचुएशन, ऐसे एक्शंस के बारे में बात करता है जो आने वाले वक्त में कंप्लीट हो चुके होंगे, मुकम्मल हो चुके होंगे. ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस के बारे में बात करता है जो आने वाले वक्त में कंप्लीट हो चुके होंगे, मुकम्मल हो चुके होंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव ऑफर्ड प्रेयर बाय 9 PM. ठीक है, मैंने क्या कहा? मैं रात 9 बजे तक नमाज पढ़ चुका हूँगा. अच्छा, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय द इवनिंग. शाम तक बारिश रुक चुकी होगी. ठीक है, एक टाइम तक कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा. इस सिचुएशन को बताने के लिए वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. वन मोर एग्जाम्पल, द स्कूल विल हैव बीन ओपन्ड बाय 15th of September. क्या मतलब? 15 सितंबर तक इंशाल्लाह स्कूल्स खोल दिए जाएंगे. ऑलराइट, तो इन सिचुएशंस को बताने के लिए, इन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ऑलराइट, अच्छा, नाउ लेट्स डिस्कस इट्स फॉर्मेशन. इट्स फॉर्मेशन इज, वी मेक फ्यूचर परफेक्ट टेंस with the subject plus will have been or shall have been. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं वो क्या हैं? या तो will have been या फिर shall have been. ऑलराइट, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब shall have been किन के साथ यूज करते हैं और will have been? वी यूज shall have been with फर्स्ट पर्सन, यानी कि I और we. I और we के साथ वी यूज shall have been. और इसके अलावा जितने भी प्रोनाउंस और नाउन्स हैं उनके साथ वी यूज will have been. Will have been यूज विद ऑल अदर प्रोनाउंस एंड नाउन. ठीक है, now let's see some exemplary sentences. Here comes the examples of future perfect tense. And first we have affirmative sentences. Number 1, I shall have finished my homework by 5 PM. I shall have finished my homework by 5 PM. मैं शाम 5 बजे तक अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका होऊंगा. ठीक है, और हमने आई और वी के साथ भी यूज़ शैल हैव. और इसके अलावा जितने भी नाउन्स हैं और जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ भी यूज़ विल हैव. ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव, द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो. द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो. कल तक बारिश रुक चुकी होगी. ऑलराइट, नाउ लेट्स मेक नेगेटिव ऑफ दीज सेंटेंसेस. अब इनके नेगेटिव देखते हैं. सो कैसे बनाएंगे नेगेटिव? आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 5 PM. तो व्हाट वी हैव डन? वी हैव जस्ट पुट नॉट आफ्टर द शैल एंड बिफोर द हैव. ठीक है, यानी दोनों के दरमियान.
क्या लगा देते हैं? नॉट. I shall not have finished my homework by 5 p.m. मेरा होमवर्क 5 बजे तक मैं अपना होमवर्क ख़त्म नहीं कर चुका होगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट, the rain will not have stopped by tomorrow. Okay, the rain will not have stopped by tomorrow. Now let's see interrogative sentences. अच्छा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है? वी नो वी स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस विद ऑक्सिलरी वर्ब. हम ऑक्सिलरी वर्ब से उनको शुरू करते हैं. सो हियर वी स्टार्ट द सेंटेंस विद शैल, देन सब्जेक्ट, देन हैव. ठीक है, शैल और हैव के सेंटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं. सो शैल आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 5 p.m. एंड इन द एंड वी वुड पुट क्वेश्चन मार्क, और आखिर में क्वेश्चन मार्क आपने लगाना है. सो शैल आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय 5 p.m. क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट, विल द रेन, विल देन सब्जेक्ट देन हैव. विल द रेन हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, क्या कल तक बारिश रुक चुकी होगी? ऑलराइट, विल द रेन हैव स्टॉप्ड बाय tomorrow. I hope you have understood very well and will make practice of future perfect tense. That's all for today. We will meet inshallah in the next class and do some book exercises. Till then, take very good care of yourself. Assalamu alaikum.